genius minds, how are you all? I hope you all are well and keeping good health too. तो रेडी हैं आज का चैप्टर स्टार्ट करने के लिए? Here's your learning buddy अपराजिता with you, history class 8, and we'll start a new chapter, chapter number 10 of our history section, nationalist movement. अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में भी नेशनलिस्ट मूवमेंट ही पढ़ा था, टिल 1919 हमने पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे 1919 टू 1947 नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या था. तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम? इमर्जेंस ऑफ महात्मा गांधी, मेथड्स ऑफ महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ेंगे. थर्ड फेज, ये जो मूवमेंट था इसका थर्ड फेज क्या था? 1919 टू 1929. Then fourth phase 1929 to 39 and fifth and final phase वो था 1939 से 1947. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 at Porbandar, Gujarat. आप सभी महात्मा गांधी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको प्यार से बापू बुलाते थे. तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में. कब हुआ था? 2nd October 1869. His real name was Mohandas Karamchand Gandhi. His father, Karamchand Gandhi, was the Diwan, Chief Minister of Porbandar. उनके फादर जो थे वो पोरबंदर के चीफ मिनिस्टर थे. He got married at the age of 13. 13 की एज में उनकी मैरिज हो गई थी. He went to England in 1888 and trained in the law and was called to the bar at age 22 in June 1892. He went to South Africa. Gandhi ji South Africa भी गए in 1893 and lived there for 21 years. 1893 से 1914 तक महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में ही रहे. Emergence of Mahatma Gandhi. There he fought for the rights of the non-whites using satyagraha, means non-violent insistence on truth and justice. और वहाँ उन्होंने साउथ अफ्रीका में रह के उन्होंने जो नॉन वाइट्स थे उनके राइट्स के लिए वो लड़े, सत्याग्रह का मार्ग. On his return to India in 1915, महात्मा गांधी entered into politics. जब 1915 में महात्मा गांधी इंडिया वापस आए तो उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम. In the beginning, he led small movements in Champaran, Ahmedabad and Kheda in order to help the poor workers get their rightful share. और शुरू में उन्होंने छोटे छोटे मूवमेंट्स स्टार्ट किए कहाँ? चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में, जिससे कि वो पुअर वर्कर्स को न्याय दिला सके. His non-violent means succeeded in India. उनका जो non-violence का तरीका था उससे इंडिया को सक्सीड हो गया इंडिया. Methods of महात्मा गांधी. अब महात्मा गांधी के मेथड्स क्या थे, किस तरह से वो वर्क करते थे? The methods employed by Mahatma Gandhi were simple for a common man to adopt. बहुत सिंपल तरीके थे. सत्याग्रह meant non-violent insistence on truth and justice without fear and faith. सत्याग्रह का मतलब था नॉन वायलेंस, किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं अपनाना, और जो कि कॉमन मैन को अडॉप्ट करने में बहुत इजी था, उसमें कोई डर भी नहीं था. नॉन कोऑपरेशन meant नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश स्कूल्स, कॉलेजेस एंड लॉ कोर्ट्स इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस. अब नॉन कोऑपरेशन का मतलब था कि ब्रिटिश और उनके जितने भी चीजें थी उनके द्वारा बनाई गई उन सब का बॉयकॉट करना, स्कूल्स का बॉयकॉट करना, स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स, इन सब का बॉयकॉट करना, और टैक्सेस नहीं. Social reforms were to go along with the national movement, which included uplift of the Dalits and eradication of social evils. Social reforms जो थे जो नेशनल मूवमेंट में, उसमें क्या था कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित्स को ऊपर था. Khadi and charkha became the symbols of national movement as the use of India-made goods was advanced. अब खादी और चरखा जो था वो सिंबल बन गया नेशनल मूवमेंट का, क्योंकि इंडिया मेड
गुड्स जो थे वो प्रमोट किए जा रहे थे। Communal harmony, as Mahatma Gandhi wanted to take both Hindus and Muslims with him. वो हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ मिलकर उनके साथ काम करते थे, जिससे कि कम्युनल हार्मनी फैले। थर्ड फेज, अब इस मूवमेंट का थर्ड फेज 1919 to 1929. The people became more aware during this phase and rose in opposition to the British government. इस फेज में लोग और ज्यादा जागरूक हो गए और वो ऑपोजिशन में खड़े हो गए ब्रिटिश। खिलाफत टू नॉन कोऑपरेशन, अभी क्या था खिलाफत टू नॉन कोऑपरेशन? खिलाफत मूवमेंट 1990। टर्की वाज डिफीटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की को डिफीट मिली थी। द ब्रिटिश डिवाइडेड टर्की एंड कमिटेड एट्रोसिटीज ऑन द मुस्लिम्स देयर। अब ब्रिटिश ने टर्की को डिवाइड कर दिया और वहां पे एट्रोसिटीज मुस्लिम्स पे लगा। It offended the feelings of the Muslims. Muslims से offend, उनकी feelings offend हुई. So they started the Khilafat movement. The Congress supported the movement in order to win their sympathy. अब उन्होंने मुस्लिम्स ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया और कांग्रेस ने इसका सपोर्ट किया। Thus the people of India rose in opposition to the British for the Rowlatt Act, the Jallianwala Bagh tragedy and atrocities being committed in Turkey. अब जो लोग थे इंडिया के वो किसके अगेंस्ट खड़े हुए? ब्रिटिश के अगेंस्ट। किस चीजों के लिए? किन चीजों के लिए? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी और जो एट्रोसिटीज की जा रही थी टर्की, उनके खिलाफ खड़े। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 to 22. In the beginning, Mahatma Gandhi wanted to support and cooperate with the British, but later he came to know that no useful purpose would be served by supporting the government. शुरू में तो महात्मा गांधी ब्रिटिश को सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन जब उनको धीरे धीरे पता लगा कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा, therefore he planned to non-cooperate with it and sought the permission of the Congress to start such a movement. अब इसलिए उन्होंने प्लान किया कि नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट एंड उसके लिए उन्होंने कांग्रेस से परमिशन ली। The Congress agreed with this and passed a resolution for the same at its Calcutta session. Calcutta session 1919 में जो था और उसमें उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया and then at its session in Nagpur in 1920. Mahatma Gandhi put up the following demands before the government. अब महात्मा गांधी ने ये सारे डिमांड्स रखी गवर्नमेंट के सामने। The government should express regret over the happenings in Amritsar. उन्होंने कहा कि अमृतसर में जो भी हुआ जलियांवाला बाग में, उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो रिग्रेट करे। The government should show liberal attitude towards Turkey, और टर्की में गवर्नमेंट लिबरल एटीट्यूड दिखाई दिया। The government should introduce a new scheme of reforms to the satisfaction of the Indians. गवर्नमेंट नया स्कीम लाएगी रिफॉर्म्स का। The British government paid no heed to these demands. So Mahatma Gandhi started the non-cooperation movement in August 1920. अब इन डिमांड्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, और इसलिए महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया अगस्त 1920. Gandhi ji advised the people to follow the following program for the non-cooperation movement. अब non-cooperation movement के लिए ये सब प्रोग्राम्स महात्मा गांधी ने लोगों को बताए फॉलो करने। Relinquish titles and resign from honorary offices. Honorary office में जो भी इंडियंस काम कर रहे थे वहां से रेजिग्नेशन के लिए बोला, और जो टाइटल्स मिले थे उनको भी छोड़ने के लिए बोला। Boycott all official and semi-official functions. जितने भी ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल फंक्शंस होते थे ब्रिटिश के, उन सब का बॉयकट करने के लिए। Withdraw children from government and government-aided schools and establish national schools. उन्होंने लोगों को बोला कि अपने अपने बच्चों को गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं वहां से निकाल लेने के लिए और एक नेशनल स्कूल फॉर्म करें। Boycott government courts and get disputes settled by national panchayats. Boycott elections to all representative bodies. Boycott foreign goods and use Swadeshi goods. फॉरेन गुड्स का बहिष्कार और स्वदेशी चीजों का यूज करना।
The movement started non-violently and spread over the whole of India in no time. ये movement जो था ये non-violence के साथ start हुआ और पूरे इंडिया में फैल गया. The government adopted repressive measures to crush the movement. अब गवर्नमेंट ने कुछ मेथड्स अपनाए इस मूवमेंट को क्रश करने, रोकने के लिए. The civil disobedience movement started on 1st February 1922. 1st February 1922 को civil disobedience movement started. The movement meant that the people would not pay any taxes to the government. अब इस civil disobedience movement के अंदर क्या था कि लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को किसी तरह का भी कोई टैक्स नहीं देंगे. However, a violent incident occurred on 5th February at Chauri Chara, due to which the movement was halted. लेकिन एक बहुत ही वायलेंट इंसिडेंट हुआ चौरी चौरा में जिस कारण इस मूवमेंट को रोक दिया गया. Now, what was that Chauri Chara incident? क्या हुआ था चौरी चौरा? Chauri Chara is a small village in Gorakhpur, a district in Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है चौरी चौरा, गोरखपुर. On 5th February 1922, about 3,000 peasants took out a procession. 3,000 peasants ने एक procession निकाला 5th February 1922. The police fired at the procession without any provocation. और पुलिस ने उस procession के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया. The people got angry at this and set the police station on fire, in which 22 policemen were burnt alive. और ये जब पुलिस ने गोली चलानी शुरू की तो लोगों को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कि 22 पुलिसमैन जिंदा जल गए. Following this incident, Gandhi ji called off the civil disobedience movement. इस इंसिडेंट के चलते उन्होंने civil disobedience movement को रोक दिया. So now let's read about the constructive program. After the non-cooperation movement was called off, the Congress concentrated on the constructive program. अब जैसे ही ये non-cooperation movement था उसको बंद कर दिया गया, उसको वापस ले लिया गया, तो एक कांग्रेस ने किस पे कंसंट्रेशन करना शुरू किया? एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम स्टार्ट किया. दिस प्रोग्राम एम्ड एट कल्टिवेटिंग Hindu-Muslim unity and eradicating the evil of untouchability. अब इसमें क्या था? ये जो कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, इसमें हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है उसको और बढ़ाने के ऊपर जोर डाला गया और इरेडिकेटिंग द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी, वो जो अनटचेबिलिटी का सिस्टम चला आ रहा था उसको हटाने की सोच रखी. All leaders stressed on the promotion of khadi. और जो गांधी जी द्वारा चलाया गया खादी का अभियान था उस पे सभी लीडर्स ने स्ट्रेस डाला. It was made mandatory for all Congress leaders and workers to wear khadi. और सभी कांग्रेस लीडर्स और वर्कर्स के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया था, जरूरी हो गया था कि वो खादी ही पहने. खादी एंड चरखा became the symbols of national movement country. अब जो खादी और चरखा थे ये एक सिंबल बन गए थे नेशनल मूवमेंट. इट क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड दे वर ड्रॉन इनटू द नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम. और इसने ये जो खादी और चरखा है इसने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया और उन सभी को नेशनल मूवमेंट ऑफ फ्रीडम में शामिल किया. द स्वराज पार्टी. The question before the Congress was whether to participate in the Government of India Act 1919 or not. अब कांग्रेस के सामने ये बहुत बड़ा सवाल था कि क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में शामिल हों या ना. The majority of the leaders were opposed to it, while Pandit Motilal Nehru and C.R. Das were in favor of it, but to non-cooperate. Now, बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो इसके ऑपोजिशन में थे कि नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन पंडित मोतीलाल नेहरू और सी आर दास इसके फेवर में. द कांग्रेस डिड नॉट एग्री टू देयर व्यू, सो दीज टू लीडर्स फॉर्म्ड अ सेपरेट पार्टी कॉल्ड द स्वराज पार्टी. और बाकी जो कांग्रेस लीडर्स थे वो इनसे सहमत नहीं थे, पंडित मोतीलाल नेहरू और सी आर दास से, तो इन दोनों ने मिलकर एक अलग
पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। The Swaraj Party fought in the elections with good success. अब जो स्वराज पार्टी थी उसने इलेक्शंस लड़े वो और जीत भी हासिल की। The Congress leaders too cooperated with it later as the party proved the futility of the reforms under the Government of India Act 1990. लेकिन कुछ समय बाद जो कांग्रेस लीडर्स जो कि इसके अपोजिशन में थे वो भी इन लोगों के साथ मिल गए इस स्वराज पार्टी। Important leaders of the time, अब उस टाइम के जो important leaders थे कौन कौन? Besides Gandhi ji, Motilal Nehru and C.R. Das, Rajendra Prasad, Dr. Ansari and Sardar Vallabhbhai Patel. अब besides Gandhi ji, ये सब लोग भी उस टाइम के important leaders. Some young leaders too emerged, such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose. So, Jawaharlal Nehru और Subhash Chandra Bose भी इन दो ये young leaders were among the important leaders. Now see, Pandit Motilal Nehru, C.R. Das, Dr. Rajendra Prasad, Dr. Ansari, Sardar Vallabhbhai Patel, Subhash Chandra Bose. Revolutionary movement. The revolutionaries were disappointed because they were hopeful that Gandhiji's movement would bring freedom to the country. अब जो revolutionaries थे उनको बहुत अफसोस था इस बात का क्योंकि वो सोच रहे थे कि गांधी जी ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया है उससे इंडिया को फ्रीडम मिल जाए। The revolutionaries had participated in the violent movement before but had become silent during the movement. They once again started their activities in a more organized manner. और कुछ टाइम के लिए वो शांत हो गए और उसके बाद फिर से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उन्होंने एक्टिविटीज स्टार्ट। The centers of revolutionary activities were Punjab, Bengal and Maharashtra as before. In addition to Bihar and Uttar Pradesh, ये सब centers थे revolutionary activities. In 1924, the Hindustan Republican Association was formed by Ram Prasad Bismil, Jogesh Chatterjee and Sachin Sanyal with an aim to overthrow the British government by force. अब 1924 में क्या हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म किया किसने? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चैटर्जी एंड सचिन सान्याल। See, this was Ram Prasad Bismil. अब उनका एम क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से हटा दिया जाए, भगा दिया जाए by force. Its first major revolutionary activity was the Kakori case. जो काकोरी केस हुआ था वो एक पहला मेजर इंसिडेंट था revolutionary activity, in which a train carrying government treasury was looted at Kakori, a village in Lucknow. अब इसमें क्या हुआ था? एक ट्रेन जो कि ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी जिसमें जा रहा था, ब्रिटिश का था वो ट्रेजरी, उसमें जो ट्रेन में जा रही थी उसको लूटा गया था। कहाँ पे? काकोरी में, जो कि एक गांव है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। Consequently, Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah Khan, Roshan Singh and Rajendra Lahiri were caught and sentenced to death, while other revolutionaries were sentenced to long-term imprisonment. और इस काकोरी केस में ये लोग पकड़े गए थे, इनको डेथ सेंटेंस दिया गया था और बाकी कुछ लीडर्स को, रेवोल्यूशनरीज को लॉन्ग टाइम इम्प्रिजनमेंट, जेल में डाल दिया। In 1928, the revolutionaries murdered J.P. Saunders, a police officer instead of James A. Scott, who was believed to be behind the death of Lala Lajpat Rai. अब 1928 में क्या हुआ? रेवोल्यूशनरीज ने जेपी सॉन्डर्स को का मर्डर कर दिया, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। किसके बदले में? जेम्स ए स्कॉट के बदले में, जिसको कि माना जाता था कि वो लाला लाजपत राय की डेथ के जिम्मेदार। Another revolutionary organization, the Hindustan Socialist Republican Army (HSRA), was formed in 1928. Two of its leaders included Bhagat Singh and Chandrasekhar Azad. अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो फॉर्म की गई थी 1928 में, उसके दो मेन लीडर्स कौन थे? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। These leaders used arms to make the deaf government hear them. ब्रिटिशर्स को कुछ भी सुनाना होता था इनको, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो डेफ थी ना,
वो बहरी थे, वो सुनती नहीं थे, वो इंडियंस का कुछ भी नहीं सुनते थे, तो उनको जो भी कुछ सुनाना होता था वो बिना आर्म्स के नहीं सुनाते थे, वो आर्म्स का यूज करते थे। दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइस। और जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद थे वो उनको अपनी लाइफ खोने का कोई डर नहीं। They planned on April 8th April 1929. Bhagat Singh and B.K. Dutt threw 2 bombs in the Central Legislative Council at a place where no one could be injured or killed. अब 8 अप्रैल को क्या हुआ, उन्होंने 2 बॉम्ब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में फेंके। It was done to protest against the public safety bill and arrest of 31 labor leaders. और ये किसके अगेंस्ट ये हुआ था, ये प्रोटेस्ट किस लिए था, कि जो पब्लिक सेफ्टी बिल था उसके लिए, और जो 31 लेबर लीडर्स अरेस्ट किए थे ब्रिटिश। शाउटिंग द स्लोगन्स इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, द 2 लीडर्स कोटेड अरेस्ट। और उन्होंने खुद को अरेस्ट भी करवा दिया। और क्या नारे लगाए थे उन्होंने, इनकलाब जिंदाबाद। They also showed leaflets which stated their purpose. और उन्हें लीफलेट्स भी दिखाए कि हमारा ये पर्पस है, इस पर्पस से हमने ये काम किया है, ये एक्टिविटी की। To make the deaf hear. Later, many revolutionaries were arrested while Bhagat Singh and B.K. Dutt were sentenced to life imprisonment. और उसके बाद और भी revolutionaries को अरेस्ट किया गया और B.K. Dutt और भगत सिंह को लाइफ टाइम imprisonment दे दिया। Shortly after the arrest and trial, the British came to know of Bhagat Singh's involvement in the murder of J.P. Saunders. अब जब भगत सिंह को अरेस्ट किया था उसके कुछ टाइम बाद उनको पता चला कि जो J.P. Saunders की जो डेथ हुई थी उसके मर्डर में भगत सिंह का हाथ है। Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were charged with the murder and sentenced to death penalty. और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को डेथ सेंटेंस दिया गया। They were hanged to death on 23rd March 1931 और 1931 23rd मार्च को इन तीनों को फांसी पे लटका दिया। So they were the brave revolutionaries. The police was in search of Chandrasekhar Azad. अब पुलिस किसे ढूंढ रही थी, चंद्रशेखर आजाद को। ये देखिए भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, इन तीनों को डेथ सेंटेंस दिया गया था और फांसी पे लटकाया गया। अब पुलिस चंद्रशेखर आजाद को ढूंढ रही। On 27th February 1931, he was in the Alfred Park, Allahabad, where the police surrounded him. अब 27th February 1931 को जो चंद्रशेखर आजाद थे वो अल्फ्रेड पार्क में थे और उनको पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। He fought with the police with his small pistol, and when he was left with only one bullet, he fired it at his own temple and made the supreme sacrifice. वो लास्ट तक लड़े जब तक उनके छोटे से पिस्टल में बुलेट्स थे, और जब लास्ट बुलेट रह गया था उनके पिस्टल में तो उन्होंने वो बुलेट अपने आप को मार लिया और सैक्रिफाइस किया अपने कंट्री के। In addition to these, a large number of other revolutionary acts took place. अब इन सब revolutionary acts के अलावा और भी revolutionary acts हुए। Activities जो थे वो क्या क्या थी? The women also took part in the revolutionary activities. कुछ women ने भी participate किया in revolutionary activities में। They helped the revolutionaries with food and information. और किस तरह से हेल्प किया, वो फूड का सप्लाई करती थी इन रेवोल्यूशनरीज को और उनको इंफॉर्मेशंस भी दे। Two of the more important women revolutionaries were Pritilata Vadedar and Kalpana Datta. She is Pritilata Vadedar and Kalpana Datta. The revolutionaries were often executed, sentenced to death penalties और given long term of imprisonment. ये दो तरह की सजाएं दी जाती थी, या तो डेथ पेनल्टी और या लॉन्ग टर्म imprisonment, जेल। The cellular jail in Andaman was called the काला पानी। ये सेल्युलर जेल जो अंडमान में है इसको काला पानी के नाम से जाना जाता था। Where most of the revolutionaries were imprisoned. ज्यादातर revolutionaries को यहीं पे जेल में डाला जाता था, imprisonment में। The revolutionaries realized that the powerful British could not throw out by force.
अब उनको ये समझ में आ गया था कि जो पावरफुल ब्रिटिश है ये इनको फोर्सिबली नहीं भगाया जा सकता. सो दे पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ फ्रीडम. अब उन्होंने किसमें पार्टिसिपेट किया? नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम. Simon Commission. What was this Simon Commission? In 1927, the British government appointed a commission to look into the working of the reforms under the Government of India Act 1919 to suggest further measures for the reform. In 1927 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने एक कमीशन अपॉइंट किया. वो क्या किस चीज की देखभाल के लिए? टू लुक इनटू द वर्किंग ऑफ द रिफॉर्म्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो भी रिफॉर्म्स होते थे उसकी टेक केयर करने के लिए एक कमीशन बिठाया गया, अपॉइंट किया. इट्स चेयरमैन वाज जॉन साइमन, who after whose name it was called the Simon Commission. और उसके जो चेयरमैन थे वो थे जॉन साइमन, जिनके नाम पर ये कमीशन का नाम रखा गया था, साइमन कमीशन. The commission had no Indian member in it. इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था. So the Congress at its session in Madras decided to boycott it. इसलिए कांग्रेस ने उनका जो सेशन था मद्रास में उसमें उन्होंने इस साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का सोचा. The Muslim League also participated in the boycott. और इनके साथ कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया इस बॉयकॉट. Wherever the commission went, the people welcomed it with black flags and slogans, Simon go back. और जब जब ये कमीशन आता था इसके सामने लोग ब्लैक फ्लैग्स लेके स्लोगन्स बोलते हुए आते थे. क्या? Simon go back. The British government dealt with the protesters severely. लाठी चार्जेस एंड फायरिंग्स वर रिस्टोर्ड. अब जैसे ही ये प्रोटेस्टर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरह से सप्रेस करती थी, लाठी चार्ज करती थी, इन पे फायरिंग करती थी. लाला लाजपत राय रिसीव्ड सीवियर लाठी ब्लोज एंड लेटर succumbed to his injuries. लाला लाजपत राय को भी बहुत सारे लाठी चार्ज का सामना करना पड़ा. गोविंद वल्लभ पंत was crippled for life in a लाठी चार्ज. जो गोविंद वल्लभ पंत थे वो जिंदगी भर के लिए उनको डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ा, क्रिपल हो गए वो इस लाठी चार्ज से. However, the people continued to agitate and brave the brutal batons of the police. Declaration for पूर्ण स्वराज. अब पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन कब और कैसे? The Nehru Committee recommended that it was useless to ask anything less than पूर्ण स्वराज from the government. अब नेहरू कमेटी जो थी उसने बोला कि ये तो यूजलेस होगा अगर हम पूर्ण स्वराज का न पूछे इस गवर्नमेंट से. दिस कमेटी आल्सो फ्रेम्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया जो था वो इसी नेहरू कमेटी ने फॉर्म किया. द कांग्रेस आस्क्ड द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 31 December 1929, फेलिंग व्हिच इट थ्रेटन्ड टू स्टार्ट द मूवमेंट फॉर स्वराज. कांग्रेस ने गवर्नमेंट से बोला था इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए 31 December 1929 तक. लॉर्ड इरविन, the then viceroy, also only agreed to release the political prisoners and have a round table conference. जो लॉर्ड इरविन थे तब वाइसरॉय जो थे उन्होंने क्या एग्री किया कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो भी थे उनको रिलीज कर दिए. The Congress, being dissatisfied, declared Poorn Swaraj as its goal at its annual session in Lahore in 1929. अब कांग्रेस इन सब चीजों से डिससेटिस्फाइड थी और उसने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया, अपना गोल बनाया पूर्ण स्वराज का, और वो एनुअल सेशन जो लाहौर में था वहां पे डिक्लेयर. It also decided that 26 January would be celebrated as the Independence Day each year. 26 January 1930 was observed as the first Independence Day. उस टाइम जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था तब डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को एवरी ईयर, और 26 जनवरी 1930 जो था उसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया. उसको अब इट वाज ऑब्जर्व्ड एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे. नाउ द फोर्थ फेज 1929 to 39.
After the declaration of पूर्ण स्वराज as the goal in 1929 में ये गोल बना लिया था पूर्ण स्वराज का, the political atmosphere of India grew more intense. Gandhiji placed 11 demands before the government and declared that if these demands were not met by the government, the civil disobedience movement would be started. अब गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स रखे गवर्नमेंट के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, और कहा कि अगर ये डिमांड्स उनकी पूरी नहीं होंगी तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है स्टार्ट कर दिया जाए. The demands included the release of all political prisoners and abolition of Criminal Investigation Department (CID), in addition to other demands of economic nature. अब उन डिमांड्स में कुछ डिमांड्स क्या थे कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाए और ये जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है इसका भी एबॉलिशन हो जाए. The Viceroy paid no attention to the demands of Gandhiji, लेकिन जो वाइसरॉय थे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया गांधीजी की डिमांड्स. The Congress therefore authorized Gandhiji to start the civil disobedience movement. और कांग्रेस ने गांधीजी को ऑथराइज कर दिया, अथॉरिटी दे दिया कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करें. Civil disobedience movement. What was this? On 12th March 1930, Gandhiji set out from the Sabarmati ashram in Ahmedabad with 78 followers for Dandi, a small village on the western seacoast, in order to break the salt law. अब 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से निकले, वहां से स्टार्ट किया जो कि अहमदाबाद में है, 78 फॉलोअर्स के साथ डांडी के लिए. डांडी एक छोटा विलेज है ऑन द वेस्टर्न सी कोस्ट. और किस लिए चले वो वहां से यहाँ तक? टू ब्रेक द सॉल्ट लॉज, जो सॉल्ट लॉज बने हुए थे उसको तोड़ने के. As they went through villages, the people welcomed them, spun cotton, and spread the message of fraternity, unity, and courage. This historic march is called the Dandi March. और इस historic march को क्या कहा जाता है? Dandi March. Look, Dandi March. Gandhiji along with his followers. On 5th April 1930, Gandhiji picked up a handful of Gandhiji picked up a handful of salt from the evaporated seawater and thus defied the law. At his call, the people defied the law of the government, prepared salt at various places, boycotted foreign goods, and attempted the closure of wine shops. अब गांधी जी के कहने पर ही लोगों ने लॉज जो थे बने हुए इनको ब्रेक करना शुरू किया. सी राजा गोपालाचारी also led a similar march from Tiruchirappalli to Vedaranyam. Khan Abdul Ghaffar Khan was in the forefront of this movement in the northwest frontier province, now in Pakistan. For his participation in the movement, he is called the Frontier Gandhi. ऐसा ही पार्टिसिपेशन उनका खान अब्दुल गफ्फार खान का भी था वहाँ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, और इसलिए उनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है. All prominent leaders of the Congress were arrested, but the civil disobedience movement continued unabated. बहुत सारे prominent leaders को arrest कर लिया गया, कांग्रेस के जो prominent leaders थे, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यू करता है. द रिप्रेसिव मेजर्स फेल टू क्रश द विल ऑफ द पीपल. जो ब्रिटिशर्स ने उनको सप्रेस करना चाहा, लेकिन लोगों के अंदर इतना ज्यादा उनका जो विल पावर था वो इतना स्ट्रांग हो चुका था कि वो उसको सप्रेस नहीं कर पाए. गांधी इरविन पैक्ट. As a pact was signed between Gandhiji and Lord Irwin, the then Viceroy of India, in March 1931. अब मार्च 1931 में गांधीजी और लॉर्ड इरविन के बीच एक पैक्ट साइन किया. According to this pact, the government agreed to release all political prisoners and amend the salt law. अब इस पैक्ट में क्या था
गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अग्री कर लिया था कि वो सभी पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ देंगे और जो सॉल्ट लॉ बना हुआ है उसमें अमेंड करेंगे, चेंजेस करेंगे। While Gandhi ji agreed to suspend the civil disobedience movement, तो गांधी जी ने भी अग्री कर लिया कि मैं भी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसको स्टॉप कर दूं। Gandhi ji went to London to attend the second roundtable conference as the sole representative of the Congress. कांग्रेस का एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव बन के गांधी जी लंदन गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, बट नो सेटलमेंट कुड बी रीच्ड, वहां कोई सेटलमेंट नहीं हो पाया। About this time, Lord Irwin was replaced by Lord Wellington as the Viceroy of India. इसी बीच क्या हुआ, जो लॉर्ड इरविन थे वो उनकी जगह पे लॉर्ड वेलिंगटन आ गए as the Viceroy of India. He adopted repressive measures. At this, Gandhi ji revived the civil disobedience movement. अब उसका जो तरीका था उसने वो रिप्रेसिव था, रिप्रेसिव मेजर्स लिए उसने, किसने, लॉर्ड वेलिंगटन ने। तो गांधी जी ने भी एक बार फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर। The third round table conference was held in 1932 in London, but it was also boycotted by the Congress. लेकिन third round table conference भी कांग्रेस ने boycott कर दिया। The civil disobedience movement waned gradually in 1934 as all the leaders had been put behind the bars and there was no leader to lead the people. और 1934 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा क्योंकि जितने भी लीडर्स थे उन सबको जेल में डाल दिया गया था और कोई भी लीडर नहीं था जो कि लोगों को गाइड कर सके। So now let's read about the communal award. About this very time, MacDonald, the Prime Minister of Britain, awarded the communal award. अब इस दौरान क्या हुआ, जो मैकडोनल्ड थे, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड किया। According to it, the untouchables would be regarded as distinct community and would be given separate representation in the legislatures. और इस कम्युनल अवार्ड में क्या था कि जो अनटचेबल्स हैं उनको एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी के हिसाब से रिगार्ड किया जाएगा और उनको एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा लेजिस्लेचर। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट एंड वेंट ऑन अ फास्ट अनटू डेथ। अब गांधी जी ने इसका प्रोटेस्ट किया और वो अनशन पे चले। Consequently, an agreement was reached between the high caste Hindus and untouchables. और एक एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में, किसके, हाई कास्ट हिंदूज और अनटचेबल्स के बीच। The common electorates would be retained, but 1,148 seats would be reserved for the depressed classes in the provincial legislative council. It also reserved 18% of the seats in the central legislative council for the untouchables. अब untouchables के लिए कुछ seats reserve कर दी। This agreement came to be known as Pune Pact. और इस agreement का नाम क्या था, Pune Pact. The government accepted this agreement and withdrew the communal award. अब गवर्नमेंट ने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया और जो कम्युनल अवार्ड था उसको विड्रॉ कर वापस ले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। The third round table conference in London led to the passing of the bill called the Government of India Act 1935. अब जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ लंदन में, उसको क्या कहा गया, उसमें एक बिल पास किया गया called the Government of India Act 1935. According to this act, अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, a federal government would be established in India which would include the native states as well. एक फेडरल गवर्नमेंट इंडिया में एस्टैब्लिश किया जाएगा जिसमें कि नेटिव स्टेट्स हैं वो भी इंक्लूड हैं। The provinces would be given complete autonomy to govern themselves. The provincial ministers were made answerable to the provincial legislatures, but the central government continued to have overall authority in important matters. अब जो provinces थे उनकी कंप्लीट ऑटोनॉमी वो थी कि वो अपने आप को खुद को गवर्न करेंगे, उनका
जो प्रोविंस है उसको वो अपने आप से गवर्न कर रही थी, और जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स थे वो आंसरेबल थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो ओवरऑल अथॉरिटी के रूप में कंटिन्यू हुआ। Hierarchy was abolished in the provincial legislatures, but it was introduced in the central legislative council. A federal court was established at the center. Center में एक federal court का establishment हुआ. The Reserve Bank of India was established. अब इसी टाइम पे Reserve Bank of India भी established. Burma and Aden were separated from India. India से बर्मा और एडन को अलग कर दिया गया. Two new provinces, Sindh and Orissa, were created as a full-fledged governor was nominated, and a full-fledged governor was nominated for the province of Northwest Frontier Province. अब सिंध और उड़ीसा भी क्रिएट किए गए और एक full-fledged governor nominate कर दिया. The Governor General and governors were under the British control, and they were responsible to the British government and not the provincial governments. और ये जो गवर्नर जनरल्स और गवर्नर्स थे, इनको कौन देखता था? वो किसके अंडर थे? वो ब्रिटिश के अंडर थे, ब्रिटिश कंट्रोल में थे. The communal or separate electorate continued as before. जो communal और separate electorate था वो पहले की तरह चलता था. Voting rights were given to more people, by which about 14% of the people could vote. और जो voting rights थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिए गए, जिससे कि 14% of the people जो थे वो वोट कर सकते. The Congress did not accept this act. लेकिन इस एक्ट को कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया. Later, the Congress participated in the elections. It succeeded in establishing ministries in 6 provinces. और वो succeed किए किसमें? Ministries 6 province में ministries established की. It was the single largest party in another 3 provinces where it formed the coalition government. On the other hand, the Muslim League won only 109 seats out of a total of 482 seats reserved for Muslims. 482 seats Muslims के लिए reserved थे, उसमें से केवल 109 seats ही जीती थी Muslim League जो थी. Only 2 provinces had non-Congress ministries. This proved that religion-based politics was not destined to be successful in India. Now, the fifth and final phase, 1939 to 1947. This phase is the last phase. ये last phase था. During this phase, demand of free India held more strength. अब इस phase में जो free India का जो demand था वो और strong हो गया. Indians came together and opposed the British rule and forced the British to leave the country. अब सारे Indians एक साथ एकजुट हो गए और उन्होंने फोर्स किया ब्रिटिश को इंडिया छोड़ने के लिए. Second World War and Freedom Movement. In 1939, the Second World War started and India was made a party to it without any consultation with the popular ministries. अब 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ उसने इंडिया वाज मेड अ पार्टी टू इट. सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और इंडिया पार्टी बना दिया गया विदाउट एनी कंसल्टेशन. कोई पॉपुलर मिनिस्ट्रीज के साथ कंसल्ट नहीं किया. द कांग्रेस डिमांडेड दैट ब्रिटेन मस्ट फ्री इंडिया फर्स्ट एंड देन मेक इंडिया अ पार्टी टू द वॉर. कांग्रेस ने डिमांड किया कि पहले ब्रिटेन इंडिया को फ्री करे, उसके बाद इंडिया को एक पार्टी बनाए. The British government did not agree to this demand. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अग्री नहीं किया. Lord Linlithgow, the then Viceroy of India, only said that the government would consult all political parties and native rulers at the end of the war, and only then any changes to the Government of India Act 1935 would be made. जो तब के वाइसरॉय थे इंडिया के लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट
सारे पॉलिटिकल पार्टीज से पहले कंसल्ट करेगी और नेटिव रूलर्स एट द एंड ऑफ द वॉर, इन सबसे कंसल्ट करेगी कब, जब वॉर का एंड हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, और उसके बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कोई चेंजेस लाए जाएंगे। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज therefore resigned in protest in late 1935, और लेट 1935 में जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। नाउ फैक्ट टू नो, the Second World War was fought between the Allied countries, कौन सी countries थी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका and Russia, and Axis countries, Germany, Italy and Japan, in which the Allied countries won. ये जो Allied countries थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका and Russia, ये जीते। This war started when Germany invaded Poland in 1939 and ended with the dropping of bombs on Hiroshima and Nagasaki. ये वॉर कब स्टार्ट हुआ, जब जर्मनी ने इन्वेड किया किस पे, पोलैंड। नाउ द रोल ऑफ कम्युनल पार्टीज, द मुस्लिम लीग वाज द मेजर कम्युनल पार्टी इन इंडिया। जो मुस्लिम लीग थी वो मेजर कम्युनल पार्टी थी इंडिया। अदर पार्टीज इंक्लूडेड द हिंदू महासभा एंड अकाली दल, और जो दूसरी पार्टी थी वो कौन सी थी, हिंदू महासभा और अकाली दल। द मुस्लिम लीग एडवोकेटेड अ टू नेशन थ्योरी। अब मुस्लिम लीग ने क्या किसको एडवोकेट किया, टू नेशन थ्योरी पे किया उन्होंने। मोहम्मद अली जिन्ना पुट फॉरवर्ड दिस डिमांड, और किसने ये डिमांड रखी, मोहम्मद अली जिन्ना। ही डिमांडेड अ सेपरेट नेशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द मुस्लिम्स के लिए उन्होंने एक सेपरेट नेशन की डिमांड की पाकिस्तान। द ब्रिटिश टू एनकरेज मुस्लिम कम्युनलिज्म इन ऑर्डर टू वीकन द नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम, और ब्रिटिश भी इस बात पे अग्री कर गए, तो क्योंकि उनको लगा कि इससे क्या होगा कि जो नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम है वो कमजोर पड़ जाएगा। इंडिविजुअल सत्याग्रह, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एंट्री ऑफ इंडिया इनटू द वॉर, गांधी जी लॉन्च्ड द इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब इंडिया की एंट्री वॉर में न हो इसके लिए उन्होंने, गांधी जी ने क्या किया, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया। He also raised the demands for freedom of speech and other rights. The police lodged more than 25,000 people in jails. पुलिस ने इस दौरान 25,000 लोगों को जेल में डाल दिया। Some of the imprisoned leaders were, किस किस को जेल में डाला था, किन लीडर्स को, सी राजा गोपालाचारी, एन बी गाडगिल, Aruna Asaf Ali, these were the very important leaders. Sarojini Naidu, then Mia Iftikharuddin, Vinoba Bhave, G.V. Mavlankar, Sri Krishna Sinha, and many others. Cripps Commission. See some of the leaders: Aruna Asaf Ali, Sarojini Naidu, Sri Krishna Sinha. Cripps Mission, 1942. क्या था ये Cripps Mission? During the Second World War, a mission was sent to India headed by Sir Stratford Cripps, a British minister. Second World War के दौरान एक मिशन भेजा गया इंडिया में, जिसको हेड किसने किया था, सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटिश मिनिस्टर थे। This mission is called the Cripps Mission. Two chief proposals of the mission were the granting of dominion status to India, and the princely states would have the right to choose whether to join the Indian Union or not. The mission also accepted the demand for Pakistan, though not directly. अब इस मिशन ने भी डिमांड फॉर पाकिस्तान जो रखा गया था मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन डायरेक्टली नहीं। The Congress leaders and the Muslim League rejected it. Now the national movement of freedom was started even more vigorously. अब जो कांग्रेस लीडर्स थे और जो मुस्लिम लीग था उसने इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया, और अब जो नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम था वो और ज्यादा उसने तेजी पकड़ ली। सी दिस इज स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स, जिनके नाम पे क्रिप्स मिशन चला। क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942। The Congress passed the Quit India resolution on 8 August 1942. अब कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, कब, 8 अगस्त 1942। However, before the movement could start, the British government took repressive measures. ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले ही
गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उसने रिप्रेसिव मेजर्स लिए थे. All prominent leaders were arrested on 9th August. अब 9th August को सारे जितने मेन लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया. The people rose in opposition और इसके खिलाफ लोग खड़े हुए, लोगों ने आवाज उठाई. They organized हड़ताल्स, took out processions and held public meetings. उन्होंने चारों तरफ हड़ताल कर दी, प्रोसेशन निकाले, जुलूस निकाले और पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज. This time the movement turned violent. और इस बार ये मूवमेंट जो था वो बहुत उसने वायलेंट रूप ले लिया. The students were in the forefront और इसमें सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहे थे वो स्टूडेंट्स. The railways were disrupted, telephones and telegraph wires were snapped and government officers attacked. The government lost complete control at many places. अब बहुत जगहों पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अपना कंट्रोल खो दिया. Some leaders such as Jayaprakash Narayan, Aruna Asif Ali, Ram Manohar Lohia, Cheta Kripalani, Achyut Patwardhan, S.M. Joshi, etc. led the movement from underground. As there were no leaders to lead the people, the movement subsided after about 3 weeks. लेकिन कोई लीडर नहीं थे इसको लीड करने के लिए, तो 3 weeks के बाद ये मूवमेंट जो है ये सबसाइड हो गया. Also, the British government had been very cruel and brutal in dealing with the people. क्योंकि ये मूवमेंट इतना स्ट्रॉन्ग रूप ले चुका था, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बहुत अत्याचार किए, लोग ब्रूटली उनको मारा. इंडियन नेशनल आर्मी. अब ये इंडियन नेशनल आर्मी क्या थी? Subhash Chandra Bose was a very dynamic leader. We all have heard about Subhash Chandra Bose. वो एक बहुत डायनामिक लीडर थे. He was appointed the president of the Congress twice. But due to his difference of opinion with Gandhi ji, he formed a separate party called Forward Bloc. उनको 2 बार कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन उनका जो ओपिनियन था वो गांधी जी के ओपिनियन से हमेशा अलग रहता था, तो जिस कारण उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक. The government grew suspicious of his activities and imprisoned him in 1940. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें 1940 में जेल में डाल दिया. However, in a dramatic act, Subhash Chandra Bose gave a slip to the police and went to Russia to seek support. But Russia had become an ally of Britain, so he finally went to Germany. अब सुभाष चंद्र बोस ने किसी तरह से उनको चकमा देकर पुलिस को, और वो निकल गए जेल से और कहाँ चले गए? रशिया गए, इस उम्मीद के साथ कि रशिया से उनको हेल्प मिलेगी, लेकिन रशिया जो था उसने हाथ मिला लिया था ब्रिटेन से. So he finally went to Hitler, the Chancellor of Germany. Now जर्मनी गए तो हिटलर जो थे वहाँ के जो चांसलर, allowed Subhash Chandra Bose to raise an army from amongst the soldiers of Indian origin. हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को एक आर्मी बनाने के लिए दी और किनको लेने के लिए बोला? उन सोल्जर्स को जो इंडियन ओरिजिन थे. By this time, Japan had conquered Singapore and made the same offer. There, an Indian officer, Mohan Singh, availed the offer and organized the Indian National Army (INA) from amongst the British soldiers of Indian origin, who had been captured by the Japanese army. The people of Indian origin in Japan to help in this cause. अब जो लोग थे वहाँ के जापान के इंडियन ओरिजिन के, उन्होंने भी इसमें हेल्प किया. राज बिहारी बोस was an Indian revolutionary who joined in this effort. राज बिहारी बोस ने इस एफर्ट में ज्वाइन किया. सुभाष चंद्र बोस was invited to join the INA. अब सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट किया गया इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन करने के लिए, and thus he became the commander in chief of the INA. और सुभाष चंद्र बोस कमांडर इन चीफ बन गए INA के. The strength of the INA reached about 45,000 soldiers. और INA की स्ट्रेंथ जो थी उसमें कितने सोल्जर्स हो गए थे? 45,000 soldiers. Bose formed the provisional government of independent India and declared war on Britain. सुभाष चंद्र बोस ने लड़ाई डिक्लेयर कर दी ब्रिटेन के खिलाफ. Many soldiers and officers of the INA were taken prisoners of war and brought to the Red Fort for trial. Subhash Chandra Bose, however, was not caught. It is believed that he was killed in an aeroplane accident, though nothing can be said with certainty. अब बहुत सारे सोल्जर्स
को बहुत सारे ऑफिसर्स को प्रिजनर बना दिया गया आईएनए के, और लेकिन सुभाष चंद्र बोस को नहीं पकड़ पाए। ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ एक एरोप्लेन एक्सीडेंट में हो गई थी, लेकिन कोई भी सबूत नहीं, नथिंग इज said with certainty, कुछ certainty नहीं, कोई proof नहीं। Now, fact to know, Subhash Chandra Bose inspired the people with his powerful words, "Give me blood and I'll give you freedom." सुभाष चंद्र बोस के जो पावरफुल वर्ड्स थे वो लोगों को बहुत इंस्पायर करते थे। वो क्या कहते थे? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सिचुएशन आफ्टर द वॉर के बाद की सिचुएशन क्या थी? द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंक्लूडेड इन 1945। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंक्लूड हुआ। The worst incident of this war was the dropping of atom bombs by America on Hiroshima and Nagasaki, in which millions of people were killed and crippled. Britain and Allies had won. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सबसे बेकार, सबसे खराब इंसिडेंट हुआ वो हुआ हिरोशिमा और नागासाकी का, जहाँ पे अमेरिका ने बॉम्ब गिराया। उससे बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड और मिलियंस पीपल जो थे वो क्रिपल हो गए, हैंडीकैप। Back home, 3 of the imprisoned officers of the INA were put on trial in the Red Fort. 3 imprisoned officers जो उनको ट्रायल पे रेड फोर्ट पे लाया गया, INA के ऑफिसर्स को। This created a great emotional upsurge among the Indian people. The Indian soldiers were not at all happy with the British because after so much of sacrifice, their condition had not improved. अब जो इंडियन सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश से खुश नहीं थे, क्योंकि इतने सैक्रिफाइस के बाद भी उनका कंडीशन अच्छा नहीं था। सो दे रोज इन रिवोल्ट्स इन मेनी प्लेसेस। अब उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिए बहुत सारी जगहों। The British officers now realized that it would be extremely difficult to rule India without the cooperation of the Indian soldiers. अब ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि बिना इंडियन सोल्जर्स के कोऑपरेशन के साथ के वो इंडिया पे रूल नहीं कर पाएंगे। Mass movement in 1945-46. In addition to the above events, the masses took to streets to protest against the British. They demanded setting free of the prisoners of the war of the INA. अब इन सब इवेंट्स के साथ ही जो मास थे, बहुत सारे लोग वो स्ट्रीट्स पे उतर आए, रोड पे उतर आए, अगेंस्ट द ब्रिटिश प्रोटेस्ट करने लगे, और उन्होंने डिमांड किया कि जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको फ्री कर दिया जाए, जो आईएनए के प्रिजनर्स हैं। At many places, hartals were observed. Even the Indian Air Force and the Indian Signal Corps expressed their resentment of serving under foreign masters. इन्होंने भी मना कर दिया सर्व करने के लिए। The civil servants too protested. The Indian Postal and Telegraph Department and the Indian Railways observed a countrywide hartal. अब जो टेलीग्राफ डिपार्टमेंट था और रेलवेज, इन लोगों ने countrywide पूरी कंट्री में हड़ताल डिक्लेयर कर दी। Violence erupted at many places. All these hartals were not led by any leaders. ये सारे हड़ताल जो थे ये किसी लीडर ने नहीं, कोई भी लीडर लीड नहीं कर रहा था इन हड़ताल। Shocked by the numerous revolts by the Indian soldiers and Indian people in general, the British government realized that it would be extremely difficult to rule India and suppress the Indian people anymore. अब ब्रिटिशर्स को अच्छे से पता लग गया था कि और सप्रेस नहीं कर सकते इंडियंस को, और इंडियन पीपल को रूल नहीं किया जा सकता। So it declared in 1946 that it intended to end its rule in India. और 1946 को ब्रिटिशर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो अपना रूल एंड कर रहे हैं इंडिया। कैबिनेट मिशन प्लान 1946. What was this? The cabinet mission arrived in India in 1946. अब 1946 में क्या आई? Cabinet mission. The chief purpose of the cabinet mission was to find out a mutually agreed solution to the Indian problem. The mission held talks with all prominent political leaders of India and proposed the following. और अब मिशन ने जो prominent political leaders थे उनसे बातचीत की और कुछ चीजें उन्होंने सामने रखी। A federal government should be established at the center, which would include the native states as well.
It should look after the defense, foreign affair and communication. एक फेडरल गवर्नमेंट स्टैब्लिश होनी चाहिए सेंटर में, जो जिसमें कि और नेटिव स्टेट्स भी इंक्लूडेड होंगे, और वो देखभाल करेगी किसका, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन. कम्युनल प्रॉब्लम्स शुड बी डिसाइडेड बाय कंसर्न कम्युनिटीज. जितने भी कम्युनिटीज की प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलग अलग कम्युनिटीज वो अपने कम्युनल प्रॉब्लम्स की देखभाल. The provinces should organize themselves in groups. An interim government should be formed which should include representatives of all prominent political parties. A constituent assembly should be convened to draft a new constitution of India. A constitutional assembly honi chahiye new constitution of India batane. It should comprise of the members elected by the provincial legislative councils and representatives of the princely states. Election to the Constituent Assembly took place in July 1946. अब जुलाई 1946 को क्या हुआ? Election to the Constituent Assembly. The Congress won 199 seats, while the Muslim League won 73. अब कांग्रेस ने 199 सीट्स जीती और मुस्लिम लीग ने 73. An interim government was formed headed by Jawaharlal Nehru. एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई और उसका हेड किसने किया? जवाहरलाल नेहरू. द मुस्लिम लीग एंड प्रिंसली स्टेट्स रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन. लेकिन इसमें मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेट करने से मना कर. द मुस्लिम लीग फिक्स्ड 16 अगस्त 1946 एज द डायरेक्ट एक्शन डे टू अचीव पाकिस्तान. अब पाकिस्तान को अचीव करने के लिए मुस्लिम लीग ने जो डेट फिक्स किया वो था 16 अगस्त 1946. It asked the Muslims to indulge in direct violence, so communal riots broke out in many parts of India. Attlee declared on 20th February 1947 that Britain would leave India by June 1948 in any case. और ये डिक्लेयर हुआ कि ब्रिटेन जो है वो छोड़ देगी इंडिया जून 1948. गांधी जी डिमांडेड इमीडिएट विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश. गांधी जी चाहते थे कि ब्रिटिशर्स तुरंत चले जाएं. इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. लॉर्ड माउंटबेटन arrived in India as the new viceroy of India. लॉर्ड माउंटबेटन न्यू वाइसरॉय बन के आए इंडिया में. In June 1947, he put up a plan which included the partition of India. Gandhiji did not accept the proposal of the partition, but the Congress leaders decided otherwise. गांधी जी ने ये पार्टीशन का जो आइडिया था इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कुछ जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने दूसरी तरह से डिसाइड किया. The British government then passed the Indian Independence Act 1947, dividing India into two independent states of India and Pakistan. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया, जिसमें कि इंडिया दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान. पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ सिंध, बलूचिस्तान, NWFE, वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट बंगाल. ये सब जो प्रोविंसेस हैं वो पाकिस्तान में चले. द पार्टीशन ऑफ इंडिया लेड टू फर्दर रॉयट्स. पार्टीशन से और ज्यादा रॉयट्स बढ़ा गए, वायलेंस बढ़ा गया. इट वाज द लार्जेस्ट माइग्रेशन ऑफ द पीपल एवर. In the communal violence, more than 5 lakh people were killed. जो communal violence हुआ उसमें 5 लाख लोगों की मौत. However, any Muslims did not accept Pakistan as their home and stayed back in India. Many Muslims, बहुत सारे Muslims ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान को अपना होम स्वीकार नहीं किया, अपना घर नहीं माना और वो इंडिया में ही रुक गए. India won its freedom but lost its unity. India आजादी तो मिल गई इंडिया को, लेकिन जो इंडिया की एकता थी वो खो दी. इंडिया became free on 15th August 1947 और इंडिया 15th August 1947 को फ्री ट्राइकलर एट रेड फोर्ट इंडिया का झंडा लहराया. कॉजेज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया. अब इंडिया के पार्टीशन के कॉज क्या? The most important cause of the partition of India was the saturation of British policy of divide and rule, to which the Indians had succumbed themselves. अब ये इंडिया का पार्टीशन का मेन कॉज जो है वो है ब्रिटिशर्स का जो डिवाइड एंड रूल, जिसमें कि इंडियंस भी, बहुत सारे इंडियंस भी इन्वॉल्व हो.
The situation was further aggravated by the obstinate view of the Muslim League, which resulted in large-scale violence. The Congress and the Muslim League never cooperated with each other. Congress और Muslim League कभी दोनों एक साथ उन्होंने वर्क नहीं किया, कभी उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया एक दूसरे, thus vitiating the entire atmosphere of the country. Such a situation was bound to result into partition, and it so happened too. इसी कारण ये पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान का हुआ. नाउ चिल्ड्रन, ये पूरा चैप्टर आपने पढ़ा और इस चैप्टर में हमने क्या क्या मेन पॉइंट्स पढ़े, क्या क्या मेन टॉपिक्स हमने कवर किए. लेट्स गो थ्रू देम वंस अगेन. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. On his return from South Africa, Gandhiji led the national movement for freedom. His chief means were satyagraha and non-violence. The Swaraj Party was formed by Motilal Nehru and C.R. Das and won elections. This won the cooperation of the Congress later. The national movement for freedom picked up momentum with the visit of Simon Commission in 1927. जब Simon Commission आया तब national movement of freedom ने और पेस पकड़ी. In 1929, the Congress demanded complete Swaraj for the first time. The civil disobedience movement in 1930 shocked the British government. 1930 में जो civil disobedience movement हुआ उससे Britishers shocked हो गए. The Second World War had deep impact on the national movement of freedom. At the failure of the Cripps mission, the Quit India movement was started in 1942. Cripps mission का failure और Quit India movement का started. The Indian National Army under the command of Subhash Chandra Bose played a major role in the national movement on the foreign soil. The cabinet mission plan allowed India to have its own constitution. जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसने इंडिया को अलाउ किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना. So now children, let's do the exercise here. Objective type questions. Take the right option. The civil disobedience movement started on. Civil disobedience movement कब start हुआ था? 1st January, 1st February, 1st March. It started on 1st February. Dash was crippled for life in a लाठी चार्ज. जब लाठी चार्ज हुई थी तो उसमें कौन क्रिपल हो गया था लाइफ टाइम के लिए? लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत, भगत सिंह. It was Govind Vallabh Pant. Dash was the leader of Muslim League. Ali brothers, Abdul Ghaffar Khan, Muhammad Ali Jinnah. The Quit India movement started in 1943, 1942, 1945. It started in 1942. The cabinet mission arrived in India. कब आया था इंडिया में कैबिनेट मिशन? 1945, 1948, 1946. It came in 1946. Now, name any two. दो नाम लिखने हैं. इसके methods used by गांधी जी. गांधी जी ने कौन कौन से methods use किए थे? First was civil disobedience. Okay. Civil disobedience और एक और क्या मेथड था? नॉन वायलेंस. इट वाज नॉन वायलेंस. फाइन. मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी. गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट स्टार्ट किए थे? तो सत्याग्रह, one was सत्याग्रह and the second one was Dandi March. Dandi March. Okay. Important political leaders of India. They were Mahatma Gandhi, and Pandit Jawaharlal Nehru. Okay. Officers of the Indian National Army. One was Subhash Chandra Bose. And the other one was Mohan Singh. Then women revolutionaries. कौन-कौन थी women revolutionaries थी इंडिया की? रानी लक्ष्मीबाई and Sarojini Naidu. Okay, children? Write T for true and F for the false statements. Satyagraha meant
non-violent incidents on truth and justice without fear or favor. Yes, सत्याग्रह का मतलब यही था, truth, justice without fear and favor. Mahatma Gandhi started the non-cooperation movement in August 1930. Yes, this is also true, children, right? Here. Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were charged with the murder and hanged to death on 23rd March 1931. Yes, this is also true. Right down T. Khan Abdul Ghaffar Khan was in the forefront of the civil disobedience movement in Northwest Frontier Province, NWFP, now in Pakistan. This is also true. So write down T here. Okay, children. So here we end up with the chapter and stay tuned for the new video. फिर से मिलेंगे हम एक न्यू चैप्टर के साथ. Till then, be happy, stay blessed and keep learning. Bye.